line with expectations. Quickly मैं बता दूं numbers अगर हम देखें तो revenue is up almost 45%, EBITDA is up 66%, margin 26% पर आया है, estimates भी यही थे, so in line really. PAT is at 9,573. चलते हैं सीधे इन strong numbers पर चर्चा करेंगे हम टीवी नरेंद्रन, MD and CEO at Tata Steel. सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपको congratulations because numbers are looking pretty strong. In fact एक बार आपसे जानना चाहेंगे overall summarize करें अगर numbers को. ये सही है कि Q3 का performance ठीक रहा. There have been many challenges क्योंकि coking coal prices तो बढ़ते रहा. Steel prices started dropping in November, December. पर हम लोग का फायदा हुआ. One is the auto contracts in India were renegotiated for the second half. उसका फायदा आया थोड़ा. Export markets which we had booked earlier, we delivered those contracts which are at higher prices. उसका भी फायदा आया है India में. Of course, our operations has been strong. And Europe में आप देखिए तो again performance has been okay, stable, improving quarter on quarter. EBITDA has not improved quarter on quarter, but that is because उधर में gas or energy costs have shot up much more than we had thought. पर आने वाले दिनों में you will continue to see an improvement in the European performance. और यूरोप में आप देखिए तो we have again renegotiated contracts, auto and packaging contracts, which will see the impact from January. सर आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कहा गया कि हायर कोकिंग कोल इम्पैक्टेड प्रोडक्शन कॉस्ट. अब सिचुएशन कैसी है, आगे किस तरह के ट्रेंड्स दिख रहे हैं? Q3 का cost impact in India has been about $80 per ton higher than Q2 और Q4 का impact होगा about $40 per ton higher than Q3. Europe में देखिए तो it has been about 80 euros impact in Q3 over Q2, will be about 35 to 40 euros impact Q4 over Q3. पर यूरोप में आप देखिए तो फायदा आ रहा है आयरन ओर का क्योंकि आयरन ओर prices have been softer. So Q3 to Q2 we had a 30 euros per ton benefit and Q4 to Q3 you'll see another 30 euros per ton benefit. So this is it's a mixed impact of both iron ore and coal in Europe. सर इंपोर्ट ड्यूटी कई तरह से कम की गई और वेरियस फ्लैट प्रोडक्ट्स इन द बजट, इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है अब आगे? तो आई थिंक जो एडजस्टमेंट हुआ है इट्स बीन फॉर कोटेड स्टील्स, सम ऑफ द हाई स्पीड स्टील्स एक्सेट्रा. So these are niche businesses. They are not. They are maybe a couple of million tons in a 120 million ton market. So uska, I don't think the impact will be very significant. Of course, it will impact those of us who are very active in coated steels, but not, I think, so material if you look at the rest of the steel industry. And scrap ka jo hai, budget mein, that has been extended. That's good for the re-rollers, for the smaller mills who import scrap. सर हम जानते हैं इस वक्त कंपनीज एक्सपेरिमेंटिंग विद कोल बेड मीथेन गैस, किस तरीके की कॉस्ट सेविंग्स आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं आगे? ऑल्सो टुवर्ड्स दिस होल एनवायरनमेंट क्लीन एनर्जी पुश जो गवर्नमेंट की बात करिए, मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत जरूरी है बनाना, तो उस पर आपकी क्या प्लान्स रहेंगे? So more than the cost, the main benefit will be because of the reduced carbon footprint. क्योंकि CBM जो है coal bed methane injecting into the blast furnace is a complex activity. तो अभी हम लोग एक पायलट लेवल में स्टार्ट किया है. एडवांटेज ये है कि ये CBM जो है इंडिया में अवेलेबल है, तो पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया में अवेलेबल है. So when India is trying to move away from coal in the blast furnaces, CBM becomes a good alternative, and इसीलिए हम लोग इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं. Overall, we are committed to bring down the carbon footprint to less than 2 tons per ton of steel by 2025 and 1.8 tons by 2030 in India. Europe में we are already below those levels. So Europe is already one of the benchmarks in the world. And उधर में हम लोग ये decade में we will start moving more and more towards gas and hydrogen because there the hydrogen will be available and the hydrogen infrastructure is being built. सर आउटलुक क्या लग रहा है प्राइसिंग को लेकर? कितना गैप है बिटवीन इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्राइसेस इस वक्त, और ये कितना क्लोज हो सकता है आगे आने वाले समय में? तो अभी अब देखिए तो even today it doesn't make sense to import because import landed देखिए तो at least 3,000 to 4,000 rupees higher than domestic prices in Bombay. तो इसीलिए imports are not really a big issue yet. उम्मीद है कि डिमांड बढ़ते जाएगा because demand while it improved Q3 over Q2, उम्मीद है कि it will continue to improve क्योंकि export markets which were very strong in Q2 softened in Q3, picking up a bit. अभी Chinese New Year के बाद उम्मीद है कि it will do better. So overall dynamic situation, but we are very hopeful and optimistic that the India demand will continue to grow given the government's focus on infrastructure.
क्विकली सर, आपका नेट डेट इस वक्त क्या है, क्या गाइडेंस होगी, और ऑल्सो अगर हम कैपेक्स की बात करें फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, क्या रखा जाएगा? तो नेट डेट आप देखें तो इट इज टुडे एट अराउंड 64,000, 62 to 63,000 crores. We are well ahead of what we had guided. So we will continue to reduce, we will continue to deleverage. सिर्फ ये देखना है कि ये क्वार्टर में हम लोग का नीलाचल का ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट करना है, तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा. But without the transaction, the net debt would have continued to drop every quarter like we've been doing for the last few quarters. दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि ये साल में net debt has come down even though the working capital requirement has been much higher, क्योंकि because of higher coking coal prices, right? So despite that, we have been able to bring down the debt quite a bit. अभी आप लोग का net debt to EBITDA is around 1. It will stay at that level, and we had guided that we will be between 1 and 2, and we can fully realize our growth plans by keeping the net debt to EBITDA below 2. And capex will be about 10,000 crores for this year, and next year also it will be in that range. We are still working out the full details, क्योंकि कलिंगनगर growth is happening. अभी नीलाचल में भी उसके बाद हम लोग कुछ खर्चा करेंगे. Okay, clearly आपने एक appetite रखा है in your books to maybe look out for more expansion, more opportunities, M&A. आपने नीलांचल की बात की सर, और उस पर मैं बिल्कुल आपको बधाई भी देना चाहती हूँ. आपने टाटा स्टील लॉन्ग ने विन किया है, the bid to acquire NINL. पहले तो सर क्या strategic sense बनेगा, and at the price that you've bought, do you think it's viable in that sense? synergy benefits पर अगर हमें बताइए, और आगे किस तरीके के और opportunities आप देखेंगे जो आपके लिए राइट फिट हो सकते हैं? जी, आप देखिए तो हम लोग का अभी 3 मेजर साइट है फॉर फ्लैट प्रोडक्ट्स. वन इज एग्जिस्टिंग साइट जमशेदपुर, जो मिक्स ऑफ फ्लैट एंड लॉन्ग. उसके अलावा अंगुल या मीरा मंडली जो साइट है, भूषण का साइट है, दैट इज एट 5 million ton, कैन बी टेकन टू 10 million ton, एंड इट्स ऑल फ्लैट प्रोडक्ट्स. कलिंगनगर देखिए तो इट इज एट करेंटली 3 million tons, बीइंग एक्सपेंडेड टू 8, कैन बी टेकन टू 16 million tons. इट विल ऑल्सो बी ऑल फ्लैट प्रोडक्ट्स. तो हम लोग का रिक्वायरमेंट था एक लॉन्ग प्रोडक्ट साइट, क्योंकि लॉन्ग प्रोडक्ट्स एक्सपेंशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में लॉन्ग प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ते जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान है, फोकस है, तो दैट विल सडनली ग्रो. सो नीलाचल वाज अ गुड साइट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज नेक्स्ट टू आवर कलिंगनगर साइट. इट इज अक्रॉस द रोड. So actually you can even look at it as a connected site, and between Nilachal and Kalinganagar we will have 6,000 acres of land in that same area, same locality. So the shared infrastructure will be much less. As we scale up both these sites, the cost efficiencies will be much more. And Nilachal, jo existing asset is 1 million tons, but you can easily take it to 10 million tons because the land is there. दूसरा बात ये है कि 100 million tons of iron ore is there with Nilachal, which today आज 100 million tons of iron ore लेना है तो you have to bid very aggressively at different premiums, which you've seen. So this comes along with the asset. So the value is there, and that's why we bid what we bid. And आप और भी इसी तरीके के acquisitions पर फोकस रखेंगे? There is definite lookout for it, sir. नहीं, अभी हम लोग का ध्यान रहेंगे ये, because now with these 3 sites itself we can grow to 40 to 50 million tons. So sure. We are not under any pressure to look at any other assets. We will certainly consider depending on the situation, but abhi whatever we want to grow for the next 10-15 years with these existing sites, we are able to grow. सर मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि सरकार से पता चला है और वो ये बात करते हैं RINL एंड सेल के जो प्लान्स हैं उन पर भी they will soon start the process. In fact it's on its way, it's work in progress. तो वहां पर आपका इंटरेस्ट रहेगा या नहीं? देखेंगे जब when the process starts we will look at it, but like I said, main focus just now was to create options for us. वो तो हो गया. Okay. And whether that happens or not, our growth ambitions can be fulfilled from existing sites. Okay, sir, एक लास्ट सवाल ग्लोबल ट्रेंड पर है. मीडिया रिपोर्ट्स हैं ऑन क्रिमिनल प्रोब इन द नेदरलैंड्स ओवर पोल्यूटेंट्स. आपको क्या कहना है उस पर सर? क्या प्रक्रिया है आपकी? So ये जो इश्यू है चल रहा है कुछ दिन से नेदरलैंड्स में, बिकॉज हम लोग का firstly I must tell you our plant in Netherlands is one of the best in the world as far as emissions and all carbon footprint, environment footprint is concerned. But local communities had some issues and they have been raising some issues, or some case had been filed some time back because of that. अभी recently एक रिपोर्ट आया था, उसका डिटेल हम लोग अभी भी पूरा डिटेल नहीं है हमारा पास, जिसमें बोला गया कि the emissions in the locality are higher than what is reported by Tata Steel.
So the prosecutor has said that they want to then check that report vis-a-vis what we have reported, etc. We have said we are happy to cooperate. We have always worked very transparently, and we are happy to work with the authorities so that this matter is put to rest. All right, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर नरेंद्रन हमसे बात करने के लिए और जुड़ने के लिए नंबर्स पर और आगे कंपनी का क्या है आउटलुक. धन्यवाद सर.